Hello students, this is topic 7 and this topic 7 is application of first this topic 7 should be practice of integration formula. Practice of integration formula. The topic 6 was integration formula and this topic 7 is practice of integration formula. It means in this topic you have to practice of the formula discussed in previous topic. Consider an example. Let the question is x to the power 10 dx. देन मैं ये मान के डिस्कस कर रहा हूँ कि पिछले टॉपिक 6 में जितने भी फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताया आप वो सब याद कर चुके हैं. देन वी remembered a formula x to the power n dx then is x to the power n plus 1 over n plus 1 and c is there. If you use this formula in this question then you will get the answer as it is x to the power 11 over 11 plus c. सो इस प्रैक्टिस राउंड में मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कैसे यूज़ करने हैं और इसके अलावा एक छोटी सी मेथड और इंटीग्रेशन में सिखाऊंगा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड. वैसे एक जनरल आपको आइडिया दूं कि इंटीग्रेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं और इतना डिस्कशन सफिशिएंट नहीं है पूरी इंटीग्रेशन में कमांड बनाने के लिए, बट हम यहाँ पर केवल अपनी फिजिक्स की नीड पूरी कर रहे हैं. तो जब मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन बताऊँगा मैं आपको तो वहाँ मैं आपको हर टाइप की इंटीग्रेशन बाय पार्ट, पार्शियल इंटीग्रेशन, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन, सारी बातें हम डिटेल में करेंगे वहाँ पर. अभी हम केवल इंटीग्रेशन को अपनी फिजिक्स की नीड पूरी करने के लिए पढ़ रहे हैं. सो इंटीग्रेशन x टू द पावर 10 is x to the power 11 plus c and we use the formula integration x to the power n is x to the power n plus 1 by n plus 1 to solve this. Let us consider another example. Let the question is integration 2x plus 4 and whole square of that. Let the question is integration 2x plus 4 whole square dx. Then अगर हम अपने फॉर्मूलों की लिस्ट को ढूंढें तो उसमें ये कोई फॉर्मूला नहीं है. हमारे फॉर्मूले लिस्ट में x to the power n is there but 2x plus 4 to the power 2 is not here. So open this according to the laws of algebra. A plus b whole square is a square plus b square plus 2ab dx. So it is integration 4x square plus 16 plus 16x, and as the rule says that you can divide the addition question in separate parts in the process of integration. So divide this question into 3 questions. This will become like this. Constant can be taken outside as the laws say. So the new line will be this. Now x square is x cubed by 3. It is 16. Differentiation of 1 is x and x is x square upon 2 plus a constant of integration. So integration 2x plus 4 whole square dx is 4 by 3 x cubed plus 16x plus 16x square by 2 plus c. You can cancel this 16 with 2. So 2 8 is just 16. So in next line you can take 8 in the place of 16 by 2. So final answer is 4 by 3 x cube plus 16x plus 8x square plus c. ये हमने अपने बेसिक जो 1920 फॉर्मूले हमने पढ़े थे ये उन फॉर्मूलों को यूज करके अपना आंसर दिया है. अब यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जैसे आपने डिफरेंशिएशन में सब्स्टिट्यूशन को यूज किया, फिजिक्स में इंटीग्रेशन के अंदर भी सब्स्टिट्यूशन की नॉलेज उतनी ही जरूरी है. देन द सेम प्रॉब्लम वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. फर्स्ट इसका थोड़ा आइडिया लीजिए. सब्स्टिट्यूशन इन इंटीग्रेशन. सब्स्टिट्यूशन इन इंटीग्रेशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में बिल्कुल डिफरेंशिएशन की तरह समझें. लेट द क्वेश्चन इज सेम. इट इज 2x plus 4 to the power 2 dx. इस मेथड में हमने 2x plus 4 to the power 2 होल स्क्वायर को ओपन किया. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ओपन करके उसे एलिमेंट्री फॉर्मूले में कन्वर्ट किया. जब ये क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया then we solve this one by one.
and get the final answer. It is 4 by 3 x cube plus 16x plus 8x square plus c. But substitution ये कहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट किसी न्यू वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करने पर फॉर्मूला जैसा बन जाए तो आप वो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. अगर ये 2x plus 4 यहाँ से रिप्लेस होकर किसी नए वेरिएबल को अपनी जगह पे सब्स्टिट्यूट करें लाइक t, then this question will be t square, and t square is same as x to the power n. You can use t also in the place of x. So x square, this expression is considered as t. Suppose this is t, then it is t square, and you can use x to the power n for solving t square. But there is a problem. Problem is that if you take 2x plus 4 is t, then this will become t square, but dx is still here. So in integration, it is a need to remove dx also. मतलब इसका ये है कि जब आप 2x plus 4 को t कंसिडर करेंगे, then उसी मोमेंट पे आपको dx को कन्वर्ट करना पड़ेगा नए डिफरेंशिएबल टर्म dt में. then ये कैसे होगा आप समझें. लेट 2x plus 4 is substituted to t. This is called substitution in integration. And this method is substitution, same question, but this is a different method to get the same answer. आंसर का एक्सप्लेनेशन बदल सकता हो सकता है इससे जो आंसर आए उसका बेसिक परफॉर्मेंस, बेसिक डिज़ाइन इससे अलग हो, बट अगर हम उसको ओपन करेंगे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे then these answer will be same. Let 2x plus 4 is t, then differentiating both the sides, we get d by dx of 2x plus 4 is equal to d by dx of t. It is 2, differentiation of x is 1 and that of 4 is 0, so it is dt by dx. So dx will become dt over 2. Now change dx by dt by 2. Dx is now dt by 2 and 2x plus 4 is t now. So ये रूल है इंटीग्रेशन का कि इंटीग्रेशन के किसी भी लाइन पे आप वेरिएबल, डबल वेरिएबल एक साथ यूज नहीं करेंगे. जिस मोमेंट पे हम 2x plus 4 को t में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हमारे लिए रूल है, रेस्ट्रिक्शन है कि उसी मोमेंट पर हम dx को dt में कन्वर्ट करेंगे. So after all these conversions, the new problem will be t to the power 2 and dt by 2 in the place of dx. So in next line it will be 1 by 2 integration of t square dt, and finally it is t cube over 3. ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया अभी आप लोगों को समझना पड़ेगा. हम ये मान के हर टॉपिक शुरू करते हैं कि इसका प्रीवियस टॉपिक आपने ध्यान से सीखा है. Then this is x to the power n and answer is x to the power n plus 1 power raised divided by the new power. 1 by 2 t cube by 3, it is t to the power 6 by 6 plus c. Finally, you can take the value of t. It is 2x, sorry, it is cube. So on taking t is 2x plus 4. So 2x plus 4 whole cube by 6 plus c. This is the answer by this method, and this one is the answer by our elementary method. Same question, तरीके दो हैं हल करने के. ये एक आंसर है, ये दूसरा आंसर है. But basically, अगर आप algebraically इस आंसर को refine करेंगे, then this will be same as that answer. Let me explain. It is 2x plus 4 whole cube. A plus b whole cube is a cube plus b cube plus 3a square of b. It is 3 times a and square of b, and plus 3 times b into square of a. It is a cube plus b cube plus 3 times a into square of b. It is 4 square of 4 plus 3 times 4 into square of 2x divided by 6. And c is also there. In next line this will be 8x cube plus 64 plus 3 to just 6, 16, 6 ja 96x. It is multiplication sign here. It is plus 2 to the 4, 4 to 16, 3 to 48 x square divided by 6, and c is also here. C is also there. It is final on solving. It will be 4 by 3x cube plus 96 by 6. It is 16x, 6 8 ja 48x square, and this term 64 by 6 plus c. You can take it
as the last part of answer. Since 64 by 6 is a constant and this is also a constant, so sum of two constant is also a constant. So in final line this can be written as 4 by 3x cube plus 16x plus 8x square plus a new constant k. So you see that all the variable part of this answer and this answer are same. Only there is a constant which is different. And this is not a matter to say that answers are different. It means कोई भी तरीका आप यूज़ करें फाइनल आंसर एक सा आता है, बस कांस्टेंट एक दूसरे से बदल जाते हैं. इट मीन्स इस आंसर का k और इस आंसर का c सेम है. सो अगर हम ये मान लें कि ये कांस्टेंट एक जैसे ही हैं, देन आंसर दिस इज द सेम आंसर एज दैट. एंड दिस इज द बेसिक मेथड फॉर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन एंड दिस इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. I will give you some other examples of substitution method. फिजिक्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको आती है तो अबाउट सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करना आपके लिए कंफर्टेबल है. लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल. लेट द एग्जांपल इज इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस x प्लस 9 dx. Then again there is two method. First, you can divide this into two questions. It is x e to the power minus x and e to the power 9 dx. E to the power 9 is a constant, so take it outside. The question will be e to the power minus x dx. E to the power x integration is e to the power x. We know by the formula. But here there is a restriction. You can't use e to the power formula of e to the power x in place of e to the power minus x. So put first let minus x is t. Substitution. देखिए ध्यान दें. जो फॉर्मूला e to the power x के लिए है, you know that e to the power x dx is e to the power x. जो फॉर्मूला e की पावर x के लिए है, आप उसे e to the power minus x के ऊपर अप्लाई कर दिए, डायरेक्ट अपना आंसर e to the power minus x नहीं दे सकते हैं इंटीग्रेशन. If the integration of e to the power x is e to the power x, then it is not necessary that integration of e to the power minus x is e to the power minus x. It is not true. So you should use substitution again. Minus x is t. Suppose minus x equal to t, then differentiating both the side, this is equal to dt by dx. Differentiation of, you can take minus outside, x is 1, it is dt by dx. So dx is minus dt. Now use this, dx is minus dt and minus x is t. In this question, the new question, the final line of the question will be e to the power 9 integration e to the power t. And this is minus dt. Minus can be taken as outside term. E to the power t is e to the power t plus c is a constant minus e to the power 9 plus t plus c, and t can be taken as minus x. आपको अपना आंसर x के टर्म्स में देना होगा. So put minus x in this place. The final answer is minus e to the power 9 minus x plus c. E to the power 9 minus x plus c. And a minus is also there. So minus sign is there and e to the power 9 minus x plus c. This is the answer of this integration. So this method is called substitution method in integration. Substitution method in integration. Another example for substitution, let the question is integration sine 6x plus pi by 6 dx. Let the question is sine 6x plus pi by 6 dx. Let this is the new question. In this question, there is a sine, and 6x plus pi by 6 is here in the place of x. An associated formula. We know a formula associated to this as integration sine x dx is minus cos x. We know this. We know that integration of sine x is minus cos x. But we cannot use the formula directly in this because x is not here. Here the term is 6x plus pi by 6. 6x plus pi by 6. So first substitute this part. Let 6x plus pi by 6 equal to t. Then 6 differentiation of x is 1 on differentiating both the sides as the rule. 6 differentiation of x is 1 plus pi by 6 is 0 equal to dt by dx. And dx will become equal to dt by 6. So dx is dt by 6 and 6x plus pi by 6 is t.
हर क्वेश्चन में एक सब्स्टिट्यूशन जो आपने अप्लाई किया है, और दूसरा जो dx की न्यू वैल्यू dt के टर्म्स में आई, ये दोनों कंसिडर करनी होगी, क्वेश्चन में अप्लाई करनी होगी. देन फाइनल लाइन विल बी sin t and dt by 6. So 1 by 6 can be taken as outside term. It is sin t dt, and integration of sin t is minus cos t plus c. This t is 6x plus pi by 6. So finally put this value, you will get 1 by 6, negative 1 by 6 cos 6x plus pi by 6 plus c. The final answer is minus 1 by 6 cos 6x plus pi by 6 plus c. This is the answer for this question. So this is question and this is answer. This is called substitution method. Substitution में आपको क्वेश्चन किसी फॉर्मूले जैसा दिया जाएगा, बट फॉर्मूला भी दिया जाएगा. देन आपको अपनी मेथड यूज करके उसे पहले बेसिक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा, तब आप अपनी फॉर्मूला लिस्ट में से किसी फॉर्मूले को उसके आंसर के लिए यूज कर पाएंगे. और एग्जांपल देखिए. लेट द क्वेश्चन एज इंटीग्रेशन e to the power t square t dt. This question is in terms of t. You can use the question in any of the variable. It is t e to the power t square dt. So first, you know that in basic formula list, this is not a formula. So first we have to consider that which formula is connected to this problem. This is e to the power x term, but t is also here. The formula is for integration e to the power x. For e to the power x, answer is e to the power x. But this is not e to the power x. It is e to the power t square. So we want to substitute t square first. Let t square is considered as u. And as obvious as the common process, differentiate this equation. Differentiate this, you will get 2t is du by dt. 2t is du by dt. So dt, t is du by 2. T dt is du by 2. Take dt, t dt as du by 2. You will get t dt is du by 2, and this will become e to the power u dt du by 2. Sorry, du by 2. This du by 2 is for t dt. T dt is now du by 2, and e to the power t square is e to the power u. So it is half integration e to the power u du, and e to the power u is e to the power u plus c. Finally, change u by t square. The final answer is half of e to the power t square plus c. So this is the basic process. हर क्वेश्चन में नजर रखनी है, ध्यान देना है. किसी भी फंक्शन को t कंसीडर नहीं किया जा सकता है. सब्स्टिट्यूशन में यही ध्यान देना पड़ता है कि कौन सी टर्म को सब्स्टिट्यूट करना सही होगा. एक क्वेश्चन और देखिए इसी से कनेक्टेड. लेट द क्वेश्चन इज sin to the power 10x into cos x dx. Then as the design provides a basic information, we know sin x can be considered as t here. On differentiating both the side, d by dx of sin x will be dt by dx. It is cos x equal to dt by dx. So cos x dx is dt now. So cos x dx is dt, and this is t to the power 10. T to the power 10 dt, and final answer is t to the power 11 by 11 plus c. Finally, substitute t is sin x, so answer is sin x to the power 11 by 11 plus c. This is answer for this question. So this is the method of substitution. हर क्वेश्चन में आपको किसी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन पहले ये डिसाइड करना होगा कि किस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना ठीक है. The answer is sin x to the power 11 by 11 plus c. Similarly, consider some other examples. Let the question is log x. This ln means log with e as base. It is log e base x. In general notation, this is written as ln x divided by x dx. This is the question. फॉर्मूला लिस्ट में आपने देखा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बट log x अगर t कंसिडर किया जाए, consider that log x is t, and on differentiating both the sides we will get, on differentiating both sides we get
1 by x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x is 1 by x, पुरानी सारी बातें आप याद करते रहें, डिफरेंशिएशन ऑफ log x is 1 by x equal to dt by dx. So 1 upon x dx is dt, 1 by x dx is dt, this 1 by x dx is dt, and this is t. So it is t dt, t dt is t square by 2, and finally take t, t is ln x square by 2 and plus c function. So answer is log x square upon 2 plus c. So this is the method of substitution for integration. Normal cases भी अगर आप लोगों को आते हैं तो इतना sufficient है कि आप इंटीग्रेशन को यूज कर पाएंगे जब हम फिजिक्स में उसे अप्लाई करेंगे. बहुत ज़्यादा हैवी इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं होती, बट एक प्रीलिम नॉलेज बहुत जरूरी है. सब्सटीट्यूशन मेथड एक बैकबोन है डिफरेंशिएशन में भी, इंटीग्रेशन में भी, जो बहुत यूजफुल है फिजिक्स के लिए. और देखिए क्वेश्चन आइडिया के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx. इंटीग्रेशन e टू द पावर x plus e to the power minus x divided by e to the power x minus e to the power minus x. Now this is the question. Then first consider e to the power x minus e to the power minus x as t. Denominator is considered as t. कुछ common problems में denominator को substitution देने से numerator dt बन जाता है. आइए चेक करते हैं कि क्या ये भी उसी कैटेगरी का प्रॉब्लम है. e to the power x minus e to the power minus x as t. Take d upon dx on both the sides. D upon dx of this is equal to dt by dx. Differentiation of e to the power x is e to the power x, and that of e to the power minus x. So e to the power minus x is also as e to the power plus x. So differentiation of e to the power minus x is e to the power minus x, but differentiate once again minus x. ये बात हम पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशिएशन में जब कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन की प्लेस लेता है, जैसे e to the power x differentiation is e to the power x, it is common, it is okay, but e to the power minus x, it is not e to the power plus x. So first differentiate this as e to the power x. We know that e to the power x is e to the power x, but here minus x is placed in place of x. So differentiate this minus x once again. You will get this. It is e to the power x minus e to the power minus x, and minus 1 is the differentiation of x. So dt by dx. And finally it is e to the power x plus e to the power minus x is dt by dx. E to the power x plus e to the power minus x dx is equal to dt. So जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ कि न्यूमरेटर completely dt बन चुका है and denominator is considered as t. So this problem is converted to dt by t and answer is log t. अपनी फॉर्मूला लिस्ट चेक कीजिए. t की जगह वैल्यू e to the power x minus e to the power minus x मैंने यहाँ से यूज की है. t is e to the power x minus e to the power minus x plus c. So our answer is log e to the power x minus e to the power minus x plus c. So this is a general idea about substitution. और भी प्रैक्टिस करते रहिए. आगे फर्दर कोर्सेज में हम आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे और जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको और इम्प्लीमेंट करना बताएंगे. तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें इंटीग्रेशन को, और जितने भी फॉर्मूले दिए उन्हें रिमेंबर